आप तो पेड़ के नीचे रह लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? लेकिन बाय नेचर व्हेन वी हैव टू सपोर्ट अदर्स, you will need all facilities, you will need house, you will need vehicle, you will need, you know, and education, children education. So to support spiritual life and to discharge responsibilities, lot of money is needed in today's world, and again depends on where you are staying. So worshipping Krishna by work versus worshipping Krishna by fruits of work. So if you are very fortunate, probably you can worship Krishna by your work only. Just let's say Prabhupada writes in purport, if somebody is a gardener, he can cultivate plants for Krishna. पर ऐसा थोड़ी होता है ना, आप गार्डनर हो ना मैं गार्डनर. Then, you know, but yeah, if somebody is a software engineer, then he can write software for Krishna. ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो शुरू में ऐसा नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं मिलेगा ना. लेकिन हाँ, आपने पैसा कमा लिया 10 साल 15 साल 20 साल, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो. Some people are there doing like that. So there now they are directly using their work to worship Krishna. But if you are not that fortunate, wherein your work can be directly used to worship Krishna, then what can be done? What is the fruit of work? Money. Simple. एक बार Radhesham Prabhu in Surat, I remember many years back, we were doing a Sankalpa camp, and Radhesham Prabhu was asking devotees. Krishna says in Bhagavad Gita that we have to offer our work to Krishna. We have to offer the results of our work to Krishna. How can you do that? He was asking. सब डिवोटी लोग अपना अपना फिलोसफी लगा रहे थे. तो हम लोग we should do in that consciousness. Before that we should remember Krishna. After that we should remember Krishna and all these things. And then Radhesham Prabhu said, "What is the fruit of the work?" Then he said, "Money." So Radhesham said, "Offer the money to Krishna." Simple. बाकी बात बाद में करेंगे. That's most important, right? And then that's an important dharma of a grihastha also. We will see. So why to earn money? I have listed down some reasons. First is money is like salt. मतलब बहुत कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम. अब आप बोलोगे नहीं प्रभु जी मैं डिवोटी हूँ, ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, मैं हैंडल करूंगा. अब दो तो पहले. ऐसा नहीं है. Once we start getting more money, then it's not very easy to not get that money in the head. जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है उसके लिए पैसा से डिटैच होना आसान है. जब पैसा आता है ना, तब एक एक पैसा निकालने में भी लगता है कि नहीं ये भी मैं बचा लूं तो अच्छा रहेगा. That's the nature of money. That's the nature of money. But yeah, if we are protected, if we are sincere, enthusiastic in proper protection of association of devotees, then more money we can use in service of Krishna, and then more is welcome. That Krishna will decide. अब उनको अब आपका reality पता है, तो then Krishna will decide आपसे लेना है कि आपको देना है. So wealth is like so. लेकिन यहाँ what I am trying to highlight is कि come is difficult, come is problem for sure. To be socially respectable बहुत important है गृहस्था के लिए. As I said, we have to decorate our ashram. That means कि you cannot be an irresponsible गृहस्था जहाँ पे बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, तो अगल बगल वाले लोग बोल के बोलेंगे ये देखो ये डिवोटी क्या कर रहा है ना. जबकि he was such a qualified person, पता नहीं किसी ने तो उसको बोल दिया कि नहीं आपका क्वालिफिकेशन को आप छोड़ दीजिए, आप एक सिंपल जॉब कर दिए. ऐसा नहीं होता है. Whoever we are, Krishna has given us some intelligence, Krishna has given us some abilities, and the society expects that from us, like our relatives. So we have to do that. उतना करना है. और अगर हम वैसे हैं तो उसमें प्रयास नहीं लगेगा. हमको कुछ और नहीं बनना है. Try to understand what I am trying to say. What I am trying to highlight is we don't have to underperform in the name of Krishna consciousness. We don't have to underperform. We have to perform as per our abilities, whatever. अगर मैं बचपन से टॉप आता आया हूँ तो अभी भी आते रहूंगा. Right? Because that is how it is. But unnecessary नहीं ये सब नहीं बेकार है और unnecessary अपना down कर लेना, that is not advisable. Because that will start having lot of repercussions. So to be socially respectable, it is important that और तब इतना अच्छा preaching होता है. Imagine आपका अगर सब बढ़िया से हो रहा है without compromising your sadhana and everything, and whatever is your level according to that you are earning and everything, relatives and all, everybody will see you in a high regard, because society तो वही देखता है ना in general, right? कि how are you placed in society, and the moment they see that अच्छा you are very well to do and you are taking care of things nicely and you are practicing Krishna consciousness, then they will run away from it or they will also like to do it. On the other hand, if they will see you miserable, somehow struggling to make your ends meet, then they will say that खाना पीना खा नहीं पा रहा है ठीक से और भक्ति में क्या मिलेगा. हाँ बोले कृष्णा की जो बेचारा परेशान है वो भक्ति में जाता है. आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, so they think many times I've seen some of my relatives also, they have this conception that when lot of problems are there in somebody's life, then they worship Krishna, as if because they have no other better option. Many people have this understanding. So who can rectify this understanding in society? Those people who have everything
and yet by choice they are worshipping Krishna, thereby telling to the whole world that that is the important duty of human life. That's why kings used to be devotees of Krishna, and that used to create such a good impression on the entire praja. तो king को थोड़ी वो पूजा कर रहा है कुछ लेने के लिए, but he is citing an example that see that is the topmost duty of every human, you know. पर जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है या जिसको आर्थिक जो भी वॉट एवर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, वो या वर्शिप करता है, लोग उसको ऐसा देखते हैं कि अच्छा उसका और कुछ नहीं हुआ तो यही एक सहारा है, उसका क्या करेगा, देखते हैं हो जाए कुछ, भगवान मदद करे उसकी. So you know, so the socially respected is an important thing, and then our preaching becomes very effective. To give charity, हम पैसा ही नहीं कमाएंगे तो देंगे क्या? और गृहस्थास, they are expected, is our dharma to give charity, to serve guests. फ्री में थोड़ी होता है. To serve guests. Prabhupada's teachings. As indicated herein, a householder should endeavor to earn money for the execution of bhakti yoga, that is Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. A householder should lead such a life that he gets full opportunity to hear and chant. He should worship the deity at home, observe festivals, invite friends in, and give them prasad. A householder should earn money for this purpose and not for sense gratification. और ये सब चीज के लिए पैसा लगता है. फेस्टिवल्स ऑब्जर्व करने के लिए पैसा लगता है. So a householder should earn money for this purpose and not for sense gratification. Now this is a very important point, because if I am earning 50,000 per month, or if I am earning, मतलब let's say I am earning more than my minimum expenditure. I am earning more than my minimum expenditure, and let's say that is my 50,000 per month earning, and my expenditure is let's say 30,000 per month. So I am earning 50,000. So if I am earning 50,000 per month, or if I am earning 10 lakhs per month, how much? It's a very common salary, by the way. If I'm earning 10 lakhs per month, my expenditure should be how much? Same. That is simple living, I think. That just because I'm earning more, I should not be spending more. As if the goal of earning money was to spend more for my own sense gratification. That whatever more you are getting, what is the use of it then? Many uses. Serve Krishna, most importantly, save for future. Do you want to keep working like a donkey till 70 years? तो अभी जो बच रहा है उसको डालते जाओ ना, जिससे कि थोड़ा जल्दी काम खत्म करके हम कर लें. Now that does not mean that we work extra hard right now with this mentality, because that is another philosophy. Right now, let us work so hard, earn so much money that in 5 years only we can pack the bag. That does not happen. Because in so hard, your Krishna consciousness will die. And if the Krishna consciousness dies, then after 5 years, what will you do? You will not be able to revive it back, because these are the daily things. जो मर्सी अपने को मिला है उसको पकड़ के रखने का, उसको छोड़ नहीं देने का. वो गैस का बलून जैसा है. बचपन में गैस का बलून से खेला है, छोड़ दिया अगर गलती से तो क्या होता है. हर बार जरूरी नहीं है आपका फीलिंग हो तो पिताजी चढ़ के उतार लेंगे. चलो वहीं तक हुआ, एक शेल्टर सिस्टम था, वहीं तक गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया. गृहस्थ आप हो तो वो छोड़ दिया तो आसमानी है सीधे ऊपर. टेम्पल में छोड़ दिया तो अगर कोई क्या पूरी कल नहीं चैंटिंग में क्या कर रहे थे, एवरीथिंग इज फाइन. गृहस्थ आश्रम में छोड़ दिया तो फिर कोई नहीं पकड़ने के लिए. राइट. सो गैस का बलून है. मर्सी क्या है? इसका बलून है, पकड़ के रखने का, छोड़ना नहीं उसको. So therefore this does not work. ऐसे just like this does not work कि एक दिन 10 दिन का खा लेंगे और अगले 10 दिन नहीं खाएंगे. Just like that does not work. Similarly this does not work कि I'll work over exert myself so much that I'll earn so much that I'll retire early. ऐसा नहीं होता है. हाँ, at the same time I'll not underwork also. मेरा जो लेवल है, मेरा जो कैपेसिटी है, I'll work according to that 10 hours a day, 8 to 10 hours a day. In fact, when we are 20s and 30s, we should be willing to work 10 hours a day, 8 to 10 hours a day, क्योंकि आने जाने में भी तो टाइम जाता है अगर वर्किंग फ्रॉम होम नहीं है तो. क्यों? Because 20s and 30s are supposed to be working hard and earning money at that time, not at the compromise of our Krishna consciousness. If we are working 8 to 10 hours a day, उसमें भी everything can be handled nicely. फिर सैटरडे संडे भी तो है बोनस, राइट. तो मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा टाइम वाइज पूरा. we'll discuss and we have so many examples doing that, so why not. लेकिन 8 to 10 hours काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए 20s and 30s में. वो भी नहीं करेंगे, then we are only feeding our laziness. If feeding our laziness, then we are doing a wrong thing as a गृहस्था. वो फ्यूचर में परेशान करेगा, वो बुरी तरह से परेशान करेगा. बेटर है अभी 8 से 10. और अब कोई बिल गेट्स टाइप का आदमी है तो वो 8 से 10 घंटा में क्या कर लेगा. कोई अंबानी टाइप का आदमी है वो 8 से 10 घंटा में क्या कर लेगा. कोई सचिन तेंदुलकर है वो 8 से 10 घंटा में क्या कर लेगा. कोई मैं हूँ वो क्या कर लेगा. कोई आप हो क्या कर लेगा. वो अपना अपना कोटा है. बट हम लोग 24 आवर्स में टाइम को फिक्स कर सकते हैं और अपने एफर्ट को फिक्स कर सकते हैं. उसका रिजल्ट फिर कृष्णा के ऊपर है.
तो when we say work hard, at the same time when we say depend on Krishna, how to reconcile both? Work hard means work 8 to 10 hours, दिन लगा के, दिल जी जान लगा के. ऐसा नहीं कि अभी ऑफिस में क्या कर रहे, रीडिंग एंड चैंटिंग कर रहा था, कान में लगा के हियरिंग कर रहा था. That is nonsense. Then we are cheating the company. ऐसा नहीं करने का, उस समय अच्छे से काम करने का. उसकी वजह से जितना भी आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, दैट इज योर डेस्टिनी. वो सैलरी देखना है, तो उतना अपने को करना है. वी डोंट हैव टू फॉल शॉर्ट ऑफ दैट when we are in 20s and 30s. Why? Because it is needed, and for future security, for so many other things, that is important. One should also not accumulate money to become puffed up in the material world. Now the दूसरा side balance. One should earn his livelihood easily and honestly, for it is better to become a coolie. Coolie बोलने करूँगा. For an honest livelihood than to become a great man in society by hook and crook. There is no harm if one becomes the richest man in the world. Prabhupada is telling. Devotee doesn't say no to anything. कोई मेरे को बना दे richest man तो बोलूँगा हाँ बना दो. What is the problem? I was waiting for that. So there is no harm if one becomes the richest man in the world by honest dealings, but one should not sacrifice the honest means of livelihood simply to accumulate wealth. इधर का उधर कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर, हाँ इधर से उधर बहुत है. That is like money consciousness, too much money consciousness. वो नहीं करना है हमको. हमको अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उसमें मेरे को इतना सैलरी मिल रहा है, बस फाइन. If I can use more brain, I can change this company to that company. If in one company, if in company A, by working for 8 hours, I am getting 1 lakh per month. If in another company, by working for 8 hours, I can get 5 lakhs per month. What will we decide? What will we choose? Obvious है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है. नहीं बोले नहीं प्रभु जी, we have to earn less, we have to remain simple. That is wrong understanding. पर उतना कमा लिया और खर्चा भी उतना ही कर दिया तो इक्वेशन वही का वही रहेगा. ऐसा नहीं करने का. Right? Such an endeavor is harmful to devotional service. वो प्रयास में चला जाएगा वो. तो थोड़ा प्रोफेशन, क्योंकि मनी ही चल रहा है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोफेशन. सो प्रोफेशन हमारा क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बताया, इफ यू आर लकी योर प्रोफेशन कैन बी वेरी अलाइंड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट मोस्ट ऑफ अस के केस में ऐसा नहीं होने वाला है. कोई तो कंपनी में जॉब करने वाला हो, किधर कृष्णा कॉन्शियसनेस अलाइन हो रहा है, वो ओनर पता नहीं क्या कर रहा होगा. तो एट द लीस्ट योर जॉब इज गिविंग यू money at the least, and at the best you are able to serve Krishna through your profession. मान लो आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब करते हो जो क्या करती है, बच्चों में कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करती है, तो दैट देन योर प्रोफेशन डायरेक्टली यू आर थ्रू प्रोफेशन यू आर सर्विंग कृष्णा. जैसे मान लो कोई इस्कॉन में जॉब करे, right? तो in one sense through his profession he is serving Krishna, but that is currently not practical for many of us because of the monetary requirements. ISKCON will not be able to provide that much money as any outside company will be able to. So at the least we are earning money from job. At the best we can serve Krishna through our job. But Prabhupada says don't be lazy in using your intelligence in service of Krishna. So whatever intelligence we have got, we should use it to serve Krishna either through our job, if that allows us the opportunity. If not, then overtime काम करना पड़ेगा कृष्णा के लिए. Competence is very important to become role models for people. This is very important. People in general have fear that if they take to KC, they will become professionally or materially incompetent. ऐसा नहीं होना चाहिए. We should be examples of such. जैसे हम बोलते हैं ना CCD, character competence devotion class तो बहुत देते हैं हम. पर ऐसा हम बनते हैं क्या? बनना चाहिए. Why are we not having more and more devotees who are good at competence, character, and devotion? We should have. If we do our duties nicely in a time-bound way, then based on whatever Krishna has provided, whatever intelligence, whatever faculty, based on that it will happen. और नहीं हो रहा है तो ठीक है, whatever it is, everybody can't be first ना, somebody will be second, somebody will be third, that is fine, but we should not underperform. हमारा जो लेवल है हमको उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए. So otherwise we are setting a wrong example, can affect the scope and impact of our services. If you are not illustrious example in society, then your scope and impact of services reduces. If you are an illustrious example, then more people will come to hear you. You will have a bigger impact. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के लिए हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट. Britishers, they put a railway line from his home to office, जैसे उनका टाइम वेस्ट ना हो. वो जो बोलते थे सब मानता था. ऐसा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं डिवोटी को? तो प्रयास क्या होगा फिर? हम बोल रहे हैं अरे हमको अच्छे से पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए, एकदम दिल और दिमाग लगा के करना चाहिए, पर मैंने वहां बाउंड्री बनाया है. क्या चीज का बाउंड्री बनाया था? टाइम का. वर्किंग फॉर मोर देन 10 hours a day will become प्रयास. मिसिंग मॉर्निंग प्रोग्राम डे आफ्टर डे. अभी वंस इन अ वाइल कुछ है, डेडलाइन है, इमरजेंसी, वो बात अलग होता है, लेकिन भाई हर दिन इमरजेंसी है तो प्रॉब्लम है, तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन है. तो अगर रास्ता विल हैव टू एडजस्ट. 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक करना पड़ेगा.
Along with growing financially, we have to grow spiritually so that you can retire by age of 50 to be able to completely depend on Krishna after that and render services in temple after 24 hours. Nahi, for temple 24 hours. So to just completely work on growing financially is wrong. Because if you are only growing financially, thinking that, oh, so that I'll be able to retire at 50, then after 50, what will we do if we have not grown spiritually? And only thinking about growing spiritually and not thinking about growing financially, we will not be able to retire at 50. You see what I'm saying? So therefore, both are important. And all for these things, right guidance and all these things are important. Just like a Mayavadi, even after getting liberation, falls down because of no attachment to lotus feet of Krishna. Similarly, we may fall back to material life if we retire without having enough attachment to service. इसलिए जो डेली बेसिस पे करना है वो करना ही है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जो वीकली बेसिस पे करना है मंथली बेसिस पे. तो अगर प्रीचिंग प्रोग्राम से ये है वो है तो वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड. ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाओ, completely focusing on career, thinking that after 10 years I'll come back and people will invite me with red carpet. No, you will get any services, not anything, plus your own level of consciousness, everything will go down. तो जो करना है उसी में करना है. हाँ, कम ज्यादा चलता है लेकिन कनेक्टेड रहना है, बलून पकड़े रहना है. बलून छोड़ दिया तो पता नहीं कब मिलेगा वो. Right, so that is very important. So this is a golden formula which we all can remember. Physically we should be, mentally we should be, socially we should be, economically we should be, and spiritually we should be. This is very important. Spiritually, if we are not connected, gas balloon. ये मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, अभी मेरे को याद आया, घर जाके बच्चों को बताऊंगा. Very important, nice example. Gas balloon. पकड़ के रखना है, छोड़ दिया तो उड़ जाएगा. We have to be spiritually connected. Okay. ठीक है, this is nice, this is important. Physically fit, health is also important for a grihastha, especially as our age increases. Not grihastha, for brahmachari also. Actually, we all know. Because body will break down, and in today's age, like हमारे पिताजी लोग तो क्या 80 साल 90 साल, दादाजी लोग भी फर्स्ट क्लास फिट फाट है, मॉर्निंग वॉक करते हैं. हम लोग 80 90 तो जिंदा भी रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं. अभी ऑलरेडी 40 में टेंशन हो रहा है. राइट, सो इट्स वेरी. अब हम लोग आए थे, तुम एक मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया. कौन सा मुद्दा था? मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर इज सॉर्टेड आउट. नेक्स्ट मैटर, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर गृहस्थ इज wife. Importance of dharma patni. Kshatriyas and grihasthas, however, actually need the encouragement of their wives in order to execute their duty. So wife is actually supposed to be a very positive companion, because they actually need the encouragement of their wives in order to execute their duties. Indeed, a grihastha or kshatriya cannot properly execute his responsibilities without the association of his wife. The association of a good wife is necessary in a life of karma and political affairs. Queen Bharismati always kept Maharaj Priyavrat very encouraged, and thus he executed his governmental duty very properly. Bhagavatam क्या है? रामायण महाभारत नहीं डाल रहा हूँ मैं. तो Bhagavatam also has everything. Details ज़्यादा उसमें नहीं रहेगा, पर principles रहेगा. Right? So a good wife is not Maya. We don't have to run away from her. Rather, she will support us in our dharmic activities. She will actually be like an alarm clock. Set हम ही करेंगे alarm. रात में अलार्म कौन सेट करता है? हमको उठाता कौन है? अलार्म क्लॉक. I had heard this example from one of my seniors about a wife. मैंने पूछा था, प्रभु जी, पर आपने बोल रहे हैं wife is like good intelligence and helps to remind husband about some duties. मैं बोला, पर प्रभु जी, we have heard husband is guru of wife. तो मैं बोला, yeah, it's like you set the alarm and the alarm wakes you up. So you only create the environment, you only tell what you want, what are your desires. And आदमी तो नालायक होता है, भूल जाता है. So wife will remind. Because a good wife is good intelligence of a husband. A good wife is compared to be good intelligence of a husband. So such is an important role, and then you become complete, basically. इसलिए ऐसा नहीं है, बॉदरेशन नहीं है, वो एक्चुअली हमारा डिस्टॉर्शन हो गया है समाज में. When men and women are not playing their roles properly, तो इसका विकृत रूप है कि वो men के लिए women burden बन गया है और women के लिए men burden बन गया. Either burden हो गया है या केवल enjoyment का साधन बन गया है. तो Rajesh Prabhu was in one of the 2-3 days back classes, he was telling that lust converts men into monsters and women into witches. Lust makes men become monsters and women become witches. Right? So either वो problem हो गई है या because of enjoyment या because of not understanding their natural swadharma and natural duties, and men not remaining men and women not remaining women anymore.
बहुत मिक्स है। तो उस वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आ गए। अदरवाइज आइडियल अगर वैदिक सिस्टम देखा जाए ना, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी नाइसली। लॉर्ड राम आल्सो व्हेन ही डिड यज्ञ, इवन दो सीता वाज नॉट देयर, ही हैड टू मेक अ गोल्डन सीता next to him to do the yajna, because husband cannot do any yajna without wife, right? So she is actually helps in executing the duties. She is not supposed to be a burden. If you have married such a wife, I mean such a girl who becomes a wife, wife को मत मैरी करो, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। Actually a nari is capable of doing multitasking, many things she can do. पर अब आप सोच रहे हो कि इसी तरह की मेरी कोई वाइफ हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। होता है बहुत लोगों के साथ, पर उसके लिए आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। कोई भी आ गया, किसी से भी शादी कर लिए, या कुछ ज्यादा ठीक से समझे नहीं, गलत चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए, ज्यादा लुक्स पे ही चले गए, या ज्यादा इस पे चले गए कि वो तिलक सीधा लगाई है कि नहीं लगाई, तिलक पहनती हुई है कि नहीं, क्या पता तिलक नहीं लगाती हो, इस्कॉन में ना हो, वो फिर भी सेकेंडरी है। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि वैल्यू सिस्टम करेक्ट क्या, डिवोटी मटेरियल है क्या। Like Amrish Prabhu was sharing with me that some senior devotee was telling him that it is important to marry a devotee wife, whether of ISKCON or outside ISKCON. You understood? But marrying a devotee wife is important. But who told devotee means ISKCON devotee only? हम भी तो ISKCON में आने से पहले दूसरे टाइप के थे ना, तो क्या पता कोई वैसा ही हो तो अच्छा नहीं होगा क्या, वो भी तो अच्छा ही होगा ना। थोड़ी ना मानने के बाद अचानक से अच्छे बन गए, पहले खराब थे। एक फंडामेंटल अच्छा मटेरियल तो था ही ना। हम लोग जो प्रीचिंग करते हैं, तो आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स कोई कोई होता है ना बहुत अच्छा सेंटिमेंट होता है, थैंक यू बोलता है, आके प्यार भी छूता है बहुत बार। एक्सपीरियंस, समबडी हैज एक्सपीरियंस समटाइम्स व्हेन न्यू पीपल यू आर प्रीचिंग टू, तो पता चल जाता है अच्छा इसके संस्कार अच्छे हैं, अच्छे घर का है, अच्छा वैल्यू सिस्टम है। सिमिलरली वी हैव टू जज दीस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, इन वाइफ, देन यू विल बी वेरी हैप्पी that she will be able to take care of lot of things. And Chanakya Pandit says, very nice sloka this is, Mata yasya grihe nasti bharya cha priyavadini aranyam tena gantavyam yatharanyam tatha griham. Chanakya Pandit is telling, जिसके घर में माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में प्यार करने वाली माता ना हो, भार्या चा प्रियवादिनी, और मीठा बोलने वाली वाइफ ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए, अरण्यम तेन गंतव्यम, ऐसा आदमी को जंगल चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यथारण्यम तथा ग्रहम, उसका घर वैसे भी जंगली है। तो प्यार करने वाली माँ और मीठा बोलने वाली पत्नी, मतलब वाइफ का मीठा बोलना बहुत जरूरी है। तो ये सब इट्स इंपॉर्टेंट टू सी। ओके, सो प्रभुपाद इज टेलिंग, तो हम क्यों इस पे जोर दे रहे हैं, व्हाई दिस वाइफ इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई हैप्पी फैमिली लाइफ इज इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद इज टेलिंग these are very important things, that soft hearted women, vama swabhav, they should be given protection, they should be trained up how to become faithful wife, affectionate mother, then the home will be very happy. And without happiness we cannot make any spiritual progress. We must be peaceful. This is the preliminary condition. So if our home matters, family matters are disturbed, if there is a lot of fight, cooperation is not there, husband wife partnership is not there, एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, झगड़ा हो रहा है, अरे चलो मंदिर चलते हैं, नहीं नहीं जाएंगे मंदिर, या जो भी हो, ऑन व्हाटएवर, बड़े बच्चे को ये स्कूल में डालते हैं, नहीं ये स्कूल में डालेंगे, झगड़ा हो रहा है, तो फिर उसका, उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल लाइफ अफेक्ट होना ही होना है, होना ही होना है, चाहे कोई भी होगा। यू कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, भाई प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो एक बार एक माता जी ने, शादी हुई माता जी की, शुरू की बात है, when the Grihastha concept was not there in ISKCON, congregation concept was not there, so this Mataji got married and asked Prabhupada, you have told us to have our relationship with Krishna, but now this man has come in my life and he is my husband, how should I have my relationship with him, what relationship I should have with him? So Prabhupada said, just as the right hand has a relationship with the left hand through the body, so you have a relationship with your husband through Krishna, with Krishna in the center. The same thing we can also understand for ourselves in our relationship with wife. So this marriage ceremony is not for sense gratification. We should always remember, it is helping one another. The husband will help the wife will help the husband, so that both of them become advanced in Krishna consciousness and make their human life perfect. Husband means who take अब now we are getting into responsibility. अभी तो क्या फायदा, वाइफ हमको क्या फायदा होगा, अब आ जाते हैं हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ के प्रति, because we are discussing responsibilities of Grihastha life. Husband means who takes charge of the girl for life. And wife means the girl who has the resolution to serve the husband throughout life. That is husband and wife. And when the wife is in danger, the husband's duty is to give protection at any cost. That is husband-wife relationship. So responsibility है.
And many times this protection is not from enemies. This protection could be from family members. Not because family members are wrong, but out of immaturity, many things happens. And the husband, the Grihastha, Mr. Grihastha, he is supposed to be 10 steps ahead of all other family members if he really wants to be have a very happy family life. कोई गलत, कोई रॉन्ग नहीं होता है, कोई खराब नहीं होता है, लेकिन जब इमेच्योर होते हैं ना रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में, तो इवन दो योर मदर में बी गॉडेस एंड योर वाइफ में बी गॉडेस, still there will be so much fights that it will lead to divorce. Goddess to chodo, both can be initiated devotees. Which both? Mother-in-law and daughter-in-law. Because in relationships ऐसी चीज होती है, the human sentiments and all that, it's all about maturity. On the other hand, some materialists are very good at that. In fact, हमारे ही पेरेंट्स या पहले के लेखों के ले लो, बहुत लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में एकदम अच्छे होते हैं, अच्छे से, या पुराने जमाने के जो हेड ऑफ द फैमिली होते थे, सबका पहले से ही समझ लेते थे, टेक कर लेते थे, किसका क्या टेंडेंसी है उसको हिसाब से कर देते थे, किसी को अपने अधिकार के लिए लड़ना ना पड़े उससे पहले ही उसको अधिकार दे दो. Right? I mean, so many, there are a lot of maturity related things. So when these things are not there, चाहे आप डिवोटी हो चाहे नहीं हो, some problems happen because प्योर डिवोटी तो नहीं है ना हम लोग. तो प्योर डिवोटी नहीं है तो कुछ मटेरियल कंपोनेंट है. अब जब इसका मटेरियल कंपोनेंट और इसका मटेरियल कंपोनेंट रब करता है तो चिंगारी निकलती है. अब देखो प्रभुपाद बोल रहे हैं बाल भी बांका नहीं होने को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं. इफ वाइफ्स लिटिल हेयर इज इन्फ्रिंज्ड. मैं सोचा प्रभुपाद बोल क्या रहे थे, तो सोचता है क्या वो बाल भी बांका नहीं होते हुए ना, हिंदी में एक बोलते हैं ना बाल भी बांका हुआ, तो शायद उसको प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग. If wife's little hair is infringed, he should take steps immediately. That is husband. Not that accept wife today and give it up tomorrow. That is not husband. Husband must be very responsible to take care of the wife, and wife must be very chaste to serve the husband. Then family life is all right. मैं ये सोचता हूँ कि those Americans when they were there on these morning walks, what they would be thinking about these statements when they would hear if hair is infringed. One who strictly follows religious principles must not neglect to provide all facilities for the complete protection of his wife. There may be some suffering because of this. Because of what? Because of providing for wife. There may be some suffering, but one must nevertheless endure it. That is the duty of a faithful husband. By his personal example, Lord Ramchandra demonstrated his duty. ये मे स्वधर्मा निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योगा विजिता भागवत प्रसादा तानेव ते मादनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्या वितराम्य भयान शोकान्. Very nice verse. Kardam Muni continued, I have achieved the blessings of the Lord in discharging my own religious life of austerity, meditation and Krishna consciousness. Although you have not yet experienced these achievements, which are free from fear and lamentation, I shall offer them all to you because you are engaged in my service. Now just look at them. I am giving you the transcendental vision to see how nice they are. In this verse, it is described how Kardama Muni is giving transcendental gifts to his wife. Because we know how Devahoti so faithfully served Kardama Muni. उन्होंने अपना खुद का ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी, बॉडी पूरा बेकार हो गया, एकदम, लेकिन पूरा कर्दम मुनि को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने दी. तो एट द एंड कर्दम मुनि, हाउ ही इज रेसिप्रोकेटिंग? कर्दम मुनि इज गिविंग ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट्स टू द वाइफ. एंड व्हाट आर दोस टू ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट्स? अभय एंड अशोक. अभय एंड अशोक, फ्री फ्रॉम फियर एंड फ्री फ्रॉम लेमेंटेशन. अब हम बोल सकते हैं तो जी हम भी ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट देंगे ना. पहली बात तो हम कर्दम मुनि, हमारे पास कौन सा बड़का ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट? आपके पास होगा ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट, तब तो दोगे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, खाली ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट देने से नहीं होगा. कर्दम मुनि का नहीं हुआ, आपका क्या होगा? And therefore the next sloka talks about how Kardam Muni created these aerial palaces with lot of maid servants and beautiful jewelry and ornaments, like that. ऐसा नहीं है कि devotee was hankering for it, but that's the nature of wife. And unless you provide that to wife, some problem or the other will happen. It is a husband's duty to provide for a wife nicely. So Kardam Muni gave transcendental gifts, plus he gave these gifts also. और वो भी गिफ्ट ऐसा है जो हम सोच भी नहीं सकते. आसमान में महल उड़ने वाला बहुत सारा बना दिया, हजारों मेड सर्वेंट, दो seemingly attached to his beloved consort. तो ऐसा लगा एज इफ कर्दम मुनि तो हैंडपैक्ड हस्बैंड हो गए, मतलब वाइफ के आगे पीछे घूम रहे हैं, वाइफ जो बोली दे दिया.
तुम दिन को दिन कहो रात कहेंगे, something like. Though seemingly attached to his beloved consort while served by the Gandharva girls, the sage did not lose his glory, which was mastery over himself. In the aerial mention, Kardam Muni with his consort shone as charmingly as the moon in the midst of the stars in the sky, which causes rows of lilies to open in ponds at night. So therefore, for a man, self-control and sensitivity both are important. एक बार एक ब्रह्मचारी थे, एक devotee after marriage went to that brahmachari for blessings and for instructions. The brahmachari told very nice thing. मैंने note कर लिया, मैं वहीं बैठा था चुपचाप note कर लिया. 2 instructions for wife, 2 instructions for husband. What 2 instructions for wife? Chastity and satisfaction. And what 2 instructions for husband? Self-control and sensitivity. दोनों का combination देखो क्या है? Combination ये है कि self control खाली अगर आप में रहेगा ना तो आप hard hearted बन जाओगे, दूसरों के प्रति strict बन जाओगे, बहुत ज्यादा विश्वामित्र types, you know. तो इसलिए उसको किससे बैलेंस कर रहे हैं? Sensitivity. मतलब strict for yourself, lenient with others. Sensitivity. अरे कोई तकलीफ तो नहीं है. अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ को जो है सिंहासन में बैठा के आरती कर रहे डेली सुबह शाम. दैट्स नॉट द पॉइंट. बट दिस इज इवन फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव. अरे एक व्यक्ति है जो सुबह से रात काम कर रहा है, थोड़ा पूछो तो क्या सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है. दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड देन देयर इज अ नाइस म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन इज देयर, देन थिंग्स आर फाइन. अब आ जाते हैं तो पैसा हो गया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हो गया वाइफ. Now we come to children. Third most important responsibility for Grihasthas. Children. Let's see what Prabhupada says. This Krishna consciousness marriage does not mean sense gratification. No, the marriage is for producing nice children, Krishna conscious children. Because at the present moment the population is not being produced very nicely. Therefore, there is disturbance of peace all over the world. But if there are Krishna conscious children, they will grow up and they will possess all good qualities. So peace automatically will come if people become Krishna conscious, because they become highly qualified without committing any sinful activities. If such population is there in the world, there is no question of disturbance. Everyone will be peaceful and happy. So this is one of the most important duties of a Grihastha, because they are the only ones who are going to create children, not produce children. And you know this famous verse, Guru na sasya, swajano na sasya, pita na sasya, janani na sasya, daivam na tatsyan, na patishta sasyan, namo chayedya samupeta mrityum. One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. This is very clear to us. So therefore, this brings a responsibility. मजाक थोड़ी है ये जो लिखा है, मजाक है क्या? अरे हमको खुद का ठिकाना नहीं है अभी दूसरे को भी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर है लेना पड़ेगा. Either you be sincere or struggle to be sincere. कोशिश होनी चाहिए. बाकी कृष्णा will do. When in Samudra Manthan Leela, when the demigods and demons, they were told, कौन सा mountain था? Mandara mountain. When the Mandarachal, when they were told to go and bring, उन्होंने बोला कैसे बनाए, रॉड किसका बनाए? हर चीज के लिए they had to ask Krishna only. That is a dependence on Krishna. रॉड किसका बनाए? कृष्णा ने बोला मंदराचल. तो गए वो लोग, उठाए नहीं उठा उसी के नीचे दबके मर गए बहुत सारे. भागवतम says. But they did their best. Lord did not initially only said एक काम करो मैं मंदराचल लाके देता हूँ, रुको अभी लाके देता हूँ, लिया लाके दे. ऐसा नहीं किया. क्या करें? जब मंदराचल लाओ. Lord waited and saw that they are doing their best. When Lord understood that they are doing their best, then Lord waited. Do your best. बिना उसके भगवान नहीं घुसेंगे आपके लाइफ में. God helps those who help themselves. तो आप करोगे तो भगवान हेल्प करेंगे. तो अगर उसमें थोड़ा बहुत हमसे कमी भी रह जाए तो हमको भी डिलीवर कर देंगे भगवान, हमारे डिपेंडेंट को भी डिलीवर कर देंगे. मतलब इसके ऊपर इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्पिरिट समझना है, प्रिंसिपल समझना है, राइट? कि इट्स सच अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स द पॉइंट. आई एम वेरी हैप्पी टू नो that Malti Mata ji ko likha Prabhupada ne. I'm very happy to know that your daughter Saraswati is growing up nicely under your care. To see that the child is raised in full Krishna consciousness is the proper management of householder life. आपको क्या लगता है खाली वॉइस में मैनेजमेंट होता है, खाली प्रीचिंग में मैनेजमेंट होता है, खाली टेंपल मैनेजमेंट होता है? हाउसहोल्डर लाइफ में बहुत मैनेजमेंट होता है, बहुत. And when your good daughter is no longer to be so cared for by you, then you will get enough time to chant Hare Krishna. Both mother and daughter can sit together and chant Hare Krishna. So that we have to raise children like that. And वो automatically नहीं होता है, उसके लिए lot of time energy लगता है. Because in any relationship, what is most important to invest? Time. So if you have to improve our chanting, what do you have to do? Time. If you have to improve our relationship with Bhagavatam, what we have to do?
time. If we have to improve our relationship with children and wife, what we have to do? टाइम ही तो एक ऐसी चीज है जो आपके पास भी 24 ही घंटा है, मेरे पास भी 24 ही घंटा है, क्या करें, पर करना सब है, अच्छे से करना है. एंड इफ यू प्रे देन आवर टाइम विल एक्सपेंड बिकॉज कृष्णा इज टाइम. कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे. एंड यहाँ पर आई विल अगेन रिपीट अगेन फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मदर, बहुत ही इनहेरेंटली कनेक्टेड होते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर स्मॉल. इसलिए अगेन देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग अ गुड वाइफ बिकॉज द रोल ऑफ मदर इन कल्टिवेटिंग चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग नहीं प्रभु जी चलो छोड़ो कुछ भी करिए, कम से कम मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपोज तो नहीं कर रही है ना, बहुत बड़ी बात. अगर और कोई आपके पास चॉइस नहीं है तो अच्छा है, लेकिन बेटर है कि वो भी कृष्णा कॉन्शियस वैल्यूज हो उसके अंदर, क्योंकि चिल्ड्रन को जब वैल्यूज देने पड़ेंगे ना तो शी विल ट्रांसमिट हर वैल्यूज नॉट योर वैल्यूज. गेटिंग इट? So it's not just you. In Grihastha we don't think only about ourselves, we think about everybody else. So you and your husband are very sincere devotees. Now Prabhupada is writing a letter to one Mataji. You and your husband are very sincere devotees, and your husband is a nice boy, and I like him very much, and he is doing the best service to Krishna and humanity by managing the birthing center so nicely. So never mind, there may be some inconvenience in family life. क्या पता माता जी ने कंप्लेन करते हुए चिट्ठी लिखा होगा, प्रभु जी स्वामी जी सारा टाइम वो प्रीचिंग करते रहते हैं, यू नो, प्रभुपाद ने देखो अश्योरिंग लेटर लिखा है. नेवर माइंड, there may be some inconvenience in family life for the time being. Your husband is doing the highest service. You may assist your husband very nicely by concentrating all your time and efforts in raising your child in full Krishna consciousness. That will require all of your attention, and in that way you will be giving your husband the best assistance. So if you want that, you should be able to go to outstation for preaching. When will you be able to do that? And when you are confident that children are under good care, right? So spouse, life partner is very important. Okay, so that was past money, wife, children हो गया. अभी कौन बचा फैमिली में? Father, mother, you know, बाकी. So let's come to that also quickly. तो गृहस्था में थिंक अरे प्रभु जी हमारा रिलेशनशिप विद गुरु एंड कृष्णा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलो वाइफ को ले लिया, मान लिया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वाइफ तो एकदम इमीडिएट टाइप हो गया, लेकिन अब ये बाकी रिश्तेदार, यू नो, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट्स वगैरह, इन सबके प्रति भी हमारा पूरा जिम्मेदारी है क्या? हाउ टू डील विद दैट? सो लेट्स सी दैट. वी डोंट हैव टू गिव अप आवर फैमिली रिलेशनशिप्स, वी हैव टू प्यूरिफाई देम. We don't have to look at them with a material vision, we have to look at them with a spiritual vision, the relationships, that this is Krishna centered relationship. And I can help to give Krishna's love to them, and they are Krishna's property, so I can take care of them. So horizontal, you all must have heard of horizontal relationships and vertical relationships. Horizontal relationships मतलब brother sister, mother father, ये सब. Vertical relationships and neighbor वेबर सब आ गया उसमें. Vertical relationship मतलब guru and Krishna. So horizontal relationships are not necessarily an obstacle to vertical relationships. Rather, they should be seen as enhancing our vertical relationships. जैसे imagine एक साड़ी के दुकान में, if you have gone to a साड़ी shop, मदर के साथ कभी गए हो गया कुछ, तो देखो कभी कभी ऐसा रहता है, वो एम्प्लॉय लोग रहता है ना, एक एक करके वो लेडी बोलती है ये दिखाओ वो दिखाओ, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, वो वाली, और वो बेचारा खोल खोल के सब दिखा रहा होता है. साड़ी खोला मतलब उसको घड़ी करने में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद वो बोलेगी हाँ भैया नहीं समझ में नहीं आया, वो चली गई. होता है ऐसा बहुत बार. तो ये एम्प्लॉय क्या फील करेगा? बहुत गुस्सा आएगा उसको. अब वो गुस्सा या तो कस्टमर पे निकालेगा या नहीं निकालेगा. कब नहीं निकालेगा? जब उसको पता है कि उसका मालिक देख रहा है. एंड फॉर दिस शॉप कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स से इट्स एलीट शॉप. एलीट शॉप वगैरह में क्या होता है ना कि दे वांट गुड कस्टमर्स फॉर लाइफ लॉन्ग एंड दे वांट रिच कस्टमर्स. So they don't mind छोटा मोटा कोल्ड ड्रिंक पिला दिया या कोई नहीं लेके गया, they don't mind. They look in long term relationships, so customer care. So let's say if that is the policy of this shop, and if the employee knows that his owner is watching, then how will he deal with this lady? No problem, it's okay, फिर आइएगा, like that. गुस्सा होगा भी तो अंदर दबा के रखेगा वो. Similarly, when we are dealing with others, if we know Krishna is watching, and Krishna will be pleased with think that we should always think that our dealing with others is also being looked upon by Krishna, and our advancement, it depends as much as in dealing with each other as it depends on dealing with him. तभी तो कनिष्ठ अधिकारी का डेफिनेशन है कि he sees Krishna only in deity and he does not, you know, behave well with devotees. A कनिष्ठ अधिकारी. तो एक बार चेतन चंद्र प्रभु was talking about this functional identity and transcendental identity. Very nice concept. Chaitan Chandra gives some solid concepts at times. So if you see what is 2.13 Bhagavad Gita,
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. ओ अर्जुन, you are not this body, you are soul. 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तं दीक्षस्व. अभी कौन्तेय मतलब भारत, मतलब भरत का डिसेंडेंट. अभी बोला एक श्लोक पहले बॉडी नहीं हो सोल हो, और अभी बॉडी के लेके 2 बार नाम बोल दिया बॉडी को लेकर. बॉडी का नाम है ना, अर्जुन का नाम थोड़ी है, सोल का नाम थोड़ी है कौन्तेय भारत. तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. तो Chandra Prabhu took these 2 verses and he was telling there is something called as functional identity and there is something called as transcendental identity. तो हमारा ये जो बॉडी, हम इंडियन हैं, हम ये हैं, हम सो एंड सो के बेटे हैं, हम सो एंड सो के हस्बैंड हैं, ये सब क्या है? फंक्शनल आइडेंटिटी. जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये क्या है? ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी. तो दोनों जरूरी है. टू फंक्शन इन दिस वर्ल्ड फंक्शनल आइडेंटिटी इज नीडेड. और गृहस्था के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल आइडेंटिटी. In fact, that functional identity brings a responsibility on our shoulders. भारत क्यों बोला कृष्णा ने अर्जुन को? Because he wanted to remind him of his great lineage. इधर के साइड का भी, उधर के साइड का भी. कौन थे? भारत. Krishna wanted to remind Arjun of his great lineage because functional identity brings responsibility on our shoulders. आप किस घर के हो, कैसे हो, उससे आप उस घर का नाम रोशन कर रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो. चिराग का क्या बोलते हैं, घर का चिराग हो कि घर का कोयला हो, मतलब whatever, right? So functional identity brings some responsibility on our shoulders, and secondly, it can pose some obstacles in your spiritual life, or it can create some good situations in your spiritual life. So therefore, we cannot neglect or ignore our functional identity. कि नहीं नहीं हम तो कृष्णा के सर्वेंट हैं. अरे और तुम ये बच्चे के पिताजी हो, उसका क्या भूल गए? कौन पिताजी है इसका? फिर ऐसे थोड़ी होता है. Right? So for grihasthas now we have to have a right understanding of this thing, that functional identity and transcendental identity both are important. And we have to see functional identity as something which can enhance our transcendental identity. That is how Grihastha has a unique opportunity. Disadvantage or is that an advantage? क्योंकि बेचारे का और कोई चॉइस ही नहीं है और दिन रात इन लोगों से घिरा है. तो अगर एडवांसमेंट करना चाहता है तो बेटर है कि इसको कृष्णा से जोड़े, और इसको कृष्णा से जोड़ना सीख गया. क्या आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? This is a very amazing thing about Grihastha ashram. That's how it works. भारत रामायण, many times devotees have considered should we read Bhagavatam, should we read Mahabharata. ऐसा नहीं, actually Bhagavatam in fact talks a lot about functional identity, and Mahabharata and Ramayana also talk a lot. अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते. वेदे रामायणे अंतौ च मध्ये च. शुरू में, लास्ट में और बीच में क्या है? हरि सर्वत्र गीयते. वो तो है ही है. वेदेश सवेद अहं वेद वेदो वेदादि वेदेत ही है. लेकिन एक फोकस होता है किसी का, जैसे बट आई फेल्ड. मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं सेंटेंस, आई डिड माई बेस्ट इन एग्जाम बट आई फेल्ड. और दूसरा सेंटेंस है आई फेल्ड बट आई डिड माई बेस्ट इन एग्जाम. सेंटेंस दोनों सिमिलर है, लेकिन पहले वाले का फोकस क्या है? फेल. आई डिड माई बेस्ट बट आई फेल्ड. बेस्ट क्या हुआ? क्या वो तो फेल ही गया ना, फायदा क्या हुआ? और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई फेल्ड बट आई डिड माई बेस्ट. फेल हो गया ठीक है, पर आई एम हैप्पी दैट आई डिड माय बेस्ट. यू सी सेंटेंस इज सिमिलर, फैक्ट इज सिमिलर. सेंटेंस तो अलग अलग है, फैक्ट सेम है. फैक्ट सेम है, फोकस अलग है. सिमिलरली श्रीमद् भागवतम इज आल्सो टॉकिंग समटाइम्स अबाउट सेम फैक्ट्स. महाभारत रामायण आल्सो आर टॉकिंग अबाउट सेम फैक्ट्स. और भागवतम का फोकस है ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी को एनफोर्स करना, और महाभारत और रामायण का फोकस है फोकस functional identity. At the same time, this also talks about this also talks about this. So therefore, right guidance is needed for all these things. ये किसके जैसे लग रहे हैं इधर? हम सबके जैसे, मिस्टर गृहस्था.
So now that we have understood about money, children, wife, family, extended family members, neighbors, कहाँ तक दूर दूर तक बात चली गई, relatives सब तक चली गई. तो कौन है ये मिस्टर गृहस्था? सर्वेंट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, सेंसिटिव है सबको लेकर. जैसे लॉर्ड राम का एग्जाम्पल है कि जब सीता मैया ने बोला तब मुझे वो सोने का हिरण चाहिए प्लीज, तो लॉर्ड राम ने बोला अच्छा भी लेके आता हूँ. लक्ष्मण थोड़ा साइड में ले जाके बोले भगवान एक बात बताओ, आपने अपनी सृष्टि में ऐसा कुछ बनाया नहीं तो क्या जा रहे हो लेने, आपको पता है माया है. तो राम बोलते आई नो, बट आज तक कुछ मांगी नहीं, मेरे से मांग रही है तो लेने दो मेरे को, इसलिए लेने जा रहा हूँ. सेंसिटिविटी, self-controlled. Mr. Grihastha is supposed to be self-controlled. Plan life in a way so that everybody goes back home back to God. खुद को मिला के. He's a nice man, takes care of. Nice मतलब needs, interests, concerns, expectations. Offer shelter and protection. How Lord Ram became mad after Sita was kidnapped. And he can't do it alone. जो हमने सबसे पहला statement देखा था प्रभुपाद का कि how a good wife helps in executing duties. He can't do it incomplete without wife. Wife is your best support, best critic, counsel, friend. मैं लेक्चर दे दूंगा, सब लोग ताली बजाएंगे, बहुत ग्लोरिफिकेशन मिलेगा. वाइफ बोलेगी ये जो बोला ठीक नहीं बोला आपने, ऐसा हो सकता है. Yeah, no, you were very proud when you said this, or you unnecessarily ridiculed some other devotee, unnecessarily you made fun of somebody else. So wife gives a lot of good critical comments. If you have a nice relationship and partnership, wife is your best critic, seeing you inside out. But anyway, whatever it is, happy stable family life का सूत्र है art of relationships and husband wife partnership. Husband wife partnership तो मेन हो ही गया, पर बाकी जो relationships है ना उसके बारे में there are, so this is another seminar which I don't want to get into right now. पर ये relationship is a very very important aspect. क्योंकि वरना में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स. वरना मतलब आपका प्रोफेशन, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? और आश्रम में सक्सेसफुल होने के लिए रिलेशनशिप्स. एक प्राइम मिनिस्टर अगर घर आएगा अपनी माँ के पास, या वाइफ के पास आएगा, अभी के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ नहीं इसलिए मेरे को माँ याद आई, लेकिन एनीवे आएगा, और वो अगर ऐसा बिहेव करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या होगा? उसको अपना प्राइम मिनिस्टर पना करके बाहर निकल के आना पड़ेगा उसको, वो वरना बाहर है. आश्रम में रिलेशनशिप्स इज व्हाट मैटर्स. हो गए प्राइम मिनिस्टर तुम इंडिया के, यहाँ पे हमारे घर है. ओके, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्या क्या Now we come to next one. Very important. मैं पुणे में एक बार लोटस वॉइस का टेक केयर कर रहा था. I was like chairman of लोटस वॉइस and all that. लोटस वॉइस क्या है, नाम से पता चला ना, लोटस थोड़ा सॉफ्ट है, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा सा, मतलब ऐसा ढीला नहीं, ढीला इज रॉन्ग वर्ड, मतलब ठीक है आप 4 बजे मत उठो, 5 बजे उठो चलेगा ऐसा. तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, वी वर मेकिंग पॉलिसीज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या रिलैक्स कर सकते हैं. मैं जोश में आ गया, मैं बोला प्रभु जी ये डीटी वर्शिप के चक्कर में ना बहुत सेवा का प्रॉब्लम होता है वॉइस में, बहुत बार ऑल्टर, फिर क्लीनिंग, फिर कौन ये करेगा नहीं करेगा, फिर तो ऑल्टर हटा दे क्या प्रभु जी लोटस वॉइस से. शायद ऑल्टर नहीं हटाने बोला होगा मैंने, नहीं तो ऑफरिंग मैं डीटी वर्शिप हटाने बोला होगा शायद. तो एनीवे तो मैंने बोला प्रभु जी डीटी वर्शिप हटा दे क्या. नो वे, because everybody should be trained in deity worship, especially Grihasthas. They should learn how to do deity worship so that tomorrow when they get married, when they have their house, they should be doing deity worship, because Prabhupada has given that as an instruction for Grihasthas. So I was very happy to read that in some purport later. what Prabhupada said. वो हम देखेंगे अभी. And हम देखें कैसे प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं कि we wake up and we were seeing Gaur Mohan Day, ding ding ding, ring of bells. That is culture. For Grihastha, one of the most important ways by which he can create a Krishna conscious culture at home is by having an altar in home. अब उसमें लेमिनेशन हो, डीटी हो, वो डिटेल्स है, पर एटलीस्ट ऑल्टर होना चाहिए. एंड ही शुड हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज अराउंड दैट ऑल्टर, फेस्टिवल्स, आरती, कीर्तन, भजन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. So we would, and that creates amazing culture for children, amazing Krishna conscious culture for children. We would wake up to the ringing of bells, and that is much more than sending your children to some midang class, this class, that class. सब कुछ आउटसोर्स नहीं कर सकते आप गृहस्था लाइफ में. हम चाहते हैं मेरा बच्चा बेस्ट डिवोटी बने, बगल वाला जो गृहस्था है उससे भी अच्छा, वो कितना अच्छे तिलक मिदंग लगा के आ रहा है, हमारा भी बने, लेकिन कैसे हम इसका मिदंग क्लास लगवाएंगे, ये क्लास लगवाएंगे, उसको जबरदस्ती श्लोक याद करवाएंगे. That's not the ideal way of raising children. The ideal way of raising children is to set a nice example. And accept all children are different. जरूरी नहीं हर child परमांसी बन जाए.
वो भी शुरू में कैसा होगा, बाद में जाके क्या बनेगा वो टाइम ही बताएगा. But point is, we have to give love. We have to create a nice culture. Results are not in our hands. So Prabhupada said we would wake up to the ringing of bells, seeing Father doing आरती and bowing down to Krishna. ऐसा बच्चों के अंदर इंप्रेशन प्रभुपाद के अंदर. That's why DT worship is गृहस्था डिवोटी. अच्छा, एक परपोट वो जो श्रवणम कीर्तनम वाला वर्ष है ना प्रहलाद महाराज का, उसमें पूरा एक एक करके सबसे बड़ा परपोट है. उसमें 9 में से सबसे बड़ा परपोट पता है किसका है? अर्चनम का. मैं बोला श्रवणम कीर्तनम का होता, दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन, पर वो सब एक एक पैराग्राफ है. अर्चनम 6-7 पैराग्राफ है, और उसी में एक पैराग्राफ ये है, Grihastha devotees, however, are generally engaged in material activities, and therefore, if they do not take to deity worship, प्रभुपाद क्या लिखते हैं बताओ? Anyway, they will fall down. Their falling down is positively assured. कमाल है. 7/5/23/24 का परपोट. So हम डीटी वर्शिप करते हैं तो क्या फायदे होते हैं? बहुत कुछ होता है. प्यूरिटी आती है, क्लीननेस होता है, कुछ आपका टाइम टेबल बनता है. डीटी नहीं है तो टाइम टेबल आ रहा है ना, ऑब्वियस है. तो मनी देते हो आप तो आपका हार्ट भी चला जाता है लोटस फीट में. देन यू, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ नॉट यूजिंग मनी. कल्चर तो था कृष्णा कॉन्शियसनेस का घर में, नॉर्थ इंडियन टिपिकल पायस लड्डू गोपाल वगैरह सब होते हैं ना सबके घरों में. तो हम लोग का ऐसा रहता था कि चलो एक अगरबत्ती ऐसा. इसको मैं तो पता चला ये नहीं 3 अगरबत्ती करना, जो भी अच्छा क्वालिटी वाला. फिर घी कर दिया, अभी वो भी 5 लगाओ अच्छे से. घी लगाना है अच्छे से, घी से करेंगे. सो पॉइंट इज नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग ओपुलेंस फॉर कृष्णा, पॉवर्टी फॉर अवरसेल्फ. बना दिया, भगवान जी का प्लेट प्लेट खरीदा तो पैसा लगा ना. ड्रेस खरीद लिए, डेकोरेशन कर लिए, कुछ तो स्टेटस है उस हिसाब से. लेकिन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यूजिंग मनी, नॉट ओनली फॉर अवरसेल्फ बट टू फॉर लॉर्ड. एक हो गया घर में, और दूसरा हो गया फॉर टेंपल डोनेशन एंड फॉर प्रीचिंग एक्टिविटी. For yatra, if you can't give your heart to Krishna, give what is in your heart to Krishna. वो बहुत ऐसा अच्छा कोट कभी कभी बहुत बढ़िया बना देते हैं. Householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. As far as no forms, ... and one's family should worship strictly following the directions and regulations of Archana Vidhi. Any member of the family who is above 12 years of age should be initiated by a bona fide spiritual master, and all the members of the household should be engaged in the daily service of the Lord, beginning from morning 4 a.m. Householder की बात हो रही है, till night 10 p.m. by performing Mangala Arti, Niranjana, Archana, Puja, Kirtana, Shringar, Bhog, Vaikali, Sandhya Arti, Part Bhog at night, Shayan Arti, etc. Engagement in such worship of the deity under the direction of bona fide spiritual master will greatly help the householders to purify their very existence and make rapid progress in spiritual knowledge. Simple theoretical book knowledge is not sufficient for a neophyte devotee. Book knowledge is theoretical, whereas the archana process is practical. Spiritual knowledge must be developed by a combination of theoretical and practical knowledge, and that is the guaranteed way for attainment of spiritual perfection. So this deity worship is an important component. Offering भोग नहीं तो भोगा के लिए कुछ नहीं, तो भोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना. Graduating. So I was, and I was not like the way everybody was taking up job in Pune. उस समय ये था कि वॉइस से ग्रेजुएट हुआ मतलब पुणे, पुणे वॉइसेस थे वो. तो ग्रेजुएट होकर क्या करना है, पुणे में जॉब लेना है, ऐसा था. तो मेरे को लगता था कि मैं एकदम फॉलन पर्सन, क्योंकि मेरे पास ऐसा चॉइस नहीं था, क्योंकि हमारा बैंगलोर में घर था और सब वहीं रहते हैं. इट वाज अज्यूम्ड दैट आई हैव टू कम बैक देयर. So I used to think that is it my fall down that I'm not going to Pune to take up a job, ये वो. तो मैं बड़ा I used to feel very bad. तो ब्रजवासी प्रभु थे उस समय, केजीपी वॉइस में आते थे. So I think I spent 2-3 hours with him sitting in a temple hall asking Prabhuji ये है, I'll be going to Bangalore now, what should I do, ये वो.
I very बाकी मेरे को discussion कुछ याद नहीं honestly speaking. लेकिन one thing which I very clearly remember is he was emphasizing the need of setting up an altar, because once altar is there, other things gradually follow. Gradually follow. एक बार राधेश्याम प्रभु recently अभी बैंगलोर में थे, so he was giving an example कि वो पुणे में मंदिर में NVCC में he was sitting and chanting in the garden. So one person came with some 20-30 youth. जहाँ राधेश्याम प्रभु को youth दिखेगा, राधेश्याम प्रभु एकदम alert हो गए. So राधेश्याम प्रभु was saying some nicely 20-30 boys को one man has brought to temple. राधेश्याम प्रभु asked the brahmachari को find out who they are. So this brahmachari went and found out कि वो कोई तो एक संस्था, कोई organization है, spiritual organization, not Mayavadis, personalists only, and he is a very impressive and very highly qualified person and very good influential person, and he's influenced these youths to practice devotion in some way or the other. तो राधेश्याम प्रभु बोला वो call him here. तो वो बात किया प्रभु जी से, तो ये लोग they discussed, और ये बोल रहा था प्रभु जी आप लोग के मंदिर, मतलब वो जो आदमी था वो राधेश्याम प्रभु बोल रहा था कि your deities are so beautiful, and I make it a point that I will bring these boys every frequently to take darshan of the deities. तो आप लोग साल में कितना बार ड्रेस चेंज करते हो? he asked. राधेश्याम प्रभु बोले कि हम दिन में 2 बार चेंज करते हैं ड्रेस. वो फेंट कर गया बात, ये उठा. राधेश्याम प्रभु इज डिस्क्राइबिंग, मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. तो देन उठा बोला every day 2 times. राधेश्याम बोला yeah, we pamper the Lord like anything. 6 times eating, 2 times dress changing, पूरा sleeping, waking up, सब पूरा डिटेल में हम करते हैं. Then this man said, no wonder that your Lord is so jolly and smiling. And then gradually how everything, if that remains pure, then everything manifests around it. Money remains pure. Everything remains pure if deities are taken care of nicely. And that person got so attracted that he gradually came. Now he is a very big initiated devotee. And then इसके ज़्यादा राधेश्याम प्रभु ने बोला नहीं, तो मेरे को मालूम नहीं वो कौन है, तो मेरे से भी मत पूछो आप. No, but then this is example recently राधेश्याम प्रभु gave. And then he was telling that जो NVCC में बालाजी हैं, if you have seen, he was telling that initially the Balaji was like this, and now Balaji is smiling. बेटर होता है ना, तो फूड इज गेटिंग प्यूरिफाइड, सो सत्व शुद्धि सब हो जाता है, प्लस मनी इज गोइंग देयर, एवरीबॉडी बिकम्स ऑटोमेटिकली कॉन्शियस ना, लॉर्ड इज देयर, सो यू हैव टू बिकम कॉन्शियस. आई लाइक दिस एग्जांपल, आई रिपीट दिस वेरी ऑफन. आज जगन्नाथ बोलते थोड़ा बड़ी बड़ी आंखें से क्या कर रहे हैं लोग. वी डोंट वांट दैट सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Next point about giving charity. Question? Okay, question बाद में. Charity. Very important dharma of a grihastha. मतलब बात इस हद तक गंभीर है कि अगर आप चैरिटी नहीं दे पा रहे हो तो किसका टेंशन है? क्योंकि मैं एक धर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको कोई ऐसा मिल गया है जहां आप चैरिटी दे सकते हो तो किसका फॉर्चून है? तो when we are giving money to ISKCON, and especially to people whom we know, then we have to understand it's not that we are kind of supporting the temple or maintaining the temple or we are taking care of their need. वो तो आप नहीं करोगे तो भगवान किसी को अरेंज कर ही देंगे. जैसे नीलमणि कृष्ण प्रभु was telling me आज सुबह, ऊपर का जो फ्लोर है, he was telling, he was thinking यहाँ कुछ अच्छा बन जाए तो बड़ी क्या कर गया. And she was telling मैं अपने बेटे के नाम पे कुछ तो बनवाना चाहती हूँ. So she gave 20 lakhs rupees and in the name of the memory of her son that got me. तो आप नहीं दोगे तो ऐसा नहीं. कृष्ण, what's the name of that devotee? Krishnadas नहीं. There was one person ना, wealthy merchant, तो आ गया, मंदिर बन गया, right? So but it is our need to give charity. So and that is very important responsibility of Grihastha ashram. तो हमको ये नहीं, मतलब it's important, मतलब we have to think of, मतलब आपको सैलरी मिला उसमें से आप सोच लो कि कितना आपको निकालना है, परसेंटेज आप डिसाइड करो. इन जनरल 10% इज रिकमेंडेड, तो हम डिसाइड कर सकते हैं क्या है. बट अवर स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं ना 50% शुड बी फॉर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज. तो एक्चुअली दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. दैट इंक्लूड्स हमारा डीटी वर्शिप, ऑल्टर पे खर्चा, अगरबत्ती, मंदिर, फूल, यात्रा, ट्रैवल, ये सब स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह सब मिला के. बट व्हाटएवर, the idea is something we have to donate based on our capacity. ऐसा भी नहीं कि हम इतना कमा रहे हैं फिर भी 10 रुपया भी नहीं निकल रहा है पॉकेट से, ऐसा भी नहीं. और ऐसा भी नहीं कि डोनेशन के नाम पर हम कमा कुछ रहे नहीं है, पूरा डोनेशन. We have to be careful and practical. Maybe we can take individual one-on-one guidance regarding those things because depending on a financial situation. Point is 1 रुपया से लेकर
1 करोड़ तक जितना भी आप दे सकते हो, डोनेशन देना जरूरी है। टेम्पल तो serve Krishna with fruits of your work, and it is important to have the disposition of tyaga. So even though we don't have the dress of tyagi, we are supposed to have a disposition of त्यागी। और सबसे बड़ा वो डिस्पोजिशन तभी आता है जब आप पैसे को दूसरे के लिए लगाते हो। तो एक बार चेतन चंद प्रभु से one devotee asked a question. I was there in that class. He asked, Prabhuji, we have heard that we should be very conscious of whatever we are doing for Krishna. So now when we are giving charity, there are two ways. Either we can ourselves give charity check, we can cut, or every time we can do, or we can do ECS. वो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम वाला। तो इज ECS ओके? बिकॉज ECS हो रहा है तो अपने आप चला जा रहा है, तो हमको वी आर नॉट कॉन्शियस कि जा रहा है, तो इज इट ओके? सो चेतन प्रभु सेड दैट देखो, इतना भी कोई ट्रांसेंडेंटल नहीं है कि ECS कर गया वो भूल गया कि उसका पैसा जा रहा है। पहली बात तो उसको अवेयर रहता है वो। दूसरी बात, अगर नहीं भी रहे तो द फैक्ट दैट ही डिड ECS, द फैक्ट दैट ही हैज कमिटेड टू गिव सम मनी एवरी मंथ has taken care of this thing। अब उसमें जब भी मैं दे रहा हूँ तो मुझे जाता हुआ दिखना चाहिए पैसा, not needed। The fact that we have done the commitment means our seriousness is noted by Krishna, our intent is noted by Krishna। So these details we should not be very tight occupied with। I would say question was genuine question, शायद मेरे को भी आता वो question। तो give heart or what is there in the heart। Next very important dharma। Next very online people are wondering why you are laughing। So next very important dharma of Grihastha is Atithi Seva। Atithi मतलब क्या? अतिथि, that person who comes unannounced। अब वो जमाना तो गया, लोग पहले से 1 महीना पहले से प्रोग्राम बना रहता है, हम ऐसे ऐसे इतने दिन को आ रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो हम लोग को रेडी रहना चाहिए। प्रभु जी on this and this date can you come with your family for prasad to our house। हम पहले से प्लान करें, तो अतिथि रहा नहीं वो as such, लेकिन चलो कम से कम स्पिरिट में if we understand, at least that we should be ready for। So our house should not be just serving us। The doors of our house should be open to invite devotees to host programs। That is a successful grihastha, that is a wonderful grihastha। Not like this। तुम फिर टपक पड़े। एक जगह मैंने देखा था कि पहले लोग गेट के बाहर लगाते थे अतिथि देवो भव, अभी लगाते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स। नहीं होगा तो भी लगा देते हैं, कोई घूस से अंदर नहीं आए। गृहस्थ इज सपोज्ड टू डू यज्ञ, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हिच यज्ञ वी विल डू? जहां भी पूरे जितने भी प्रभुपाद की बुक्स में जहां भी यज्ञ आएगा, प्रभुपाद क्या बोलते हैं? द बेस्ट यज्ञ टू डू इन दिस एज इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 4:30 हो गया क्या? Oh Krishna, there is a meeting with Radhesham Prabhu। I think I'll have to stop right now itself। Can we do one thing? Can I take a break for a meeting and then can we? आप लोग what is the schedule now? I didn't realize। I think at least 15 minutes का बचा है। Next thing। Oh, so for you to just तो एक काम करें क्या, 5 to 6:30 वाले सेशन में first 15 minutes we'll finish this and then we'll take question answers। Is that okay? Well, Radhesham Prabhu will be waiting। I know that is unimaginable। Okay, so I'm sorry for this abrupt ending। I just now, when I did like this, I saw 4:30 हो गया, so I'm supposed to go। So let us all take break, 4:30 to 5, एक break भी हो जाएगा। 5 o'clock we'll assemble for question answer session, but we'll finish this in 15 minutes and then we'll proceed into question answer। Does that sound okay? Okay। Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय। Hare Krishna, we have used break now on 4th floor। वो भी अच्छा।